annual event. It has been rightly called the biggest uh, festival of letters in Asia. Um, with so many languages represented here, so many participants from different parts of the country. I'm thankful to Dr. Srinivas Rao and his colleagues and staff for having successfully organized this event, not only here but elsewhere in the country, year after year. Stupendous success. Uh, I must also congratulate the think tank uh, in Sahitya Akademi, which thinks of these different themes, different sessions. But if we look closely at these different sessions, we notice that uh, they are in dialogue with each other. Different thematic concerns, they are in dialogue with each other. For example, yesterday's session, which many of us must have attended, was called Indian Literature in Global Literary Landscape. Though the word translation doesn't figure there, the nature of the theme, the nature of the subject was such that willy-nilly the question of translation came in. Without translation, how can Indian literature have a global circulation? And today's session, right now, it's uh, challenges in translating literary works among culturally disparate languages. So you can see how some of these questions were already raised yesterday, and this is a continuation. There are similar sessions, parallel sessions, or sessions which come later today and tomorrow, which will again tie up with these different themes. I'll speak very briefly, and after that, I will shut up. We have a formidable panel here, veterans, experts, young and not so young. So we have expectations of this panel. And, I just hope that we'll be speaking not uh, the same things, not repeating each other or one another, but will contribute to some of the general concerns which rise out of this particular theme. Uh, there are a few aspects of translations in India. I'm not going back in time to the 15th, 16th, 17th centuries. Indigenous indigenous ways of understanding of translation, the Ramayana and the Mahabharata in different Indian languages. That is how the modern languages strengthened themselves, they evolved and strengthened themselves. But we are talking about the modern or late 19th, early 20th century concerns, where by and large there were commonalities across languages. They were especially in Odisha, Bengal, Assam. These are the territories we know of from the other parts of India. When we look at Shishir Kumar Das's volumes, that these exigencies of translation arose because of the need to produce more and more textbooks. But we are not going into that. Some of the most important writers in these languages began by translating texts either from Sanskrit or from English into their own languages. And when the missionaries started translating, say, into Odia, in Odisha, we call them, the style of their prose is generally called Padri Odia. It's very awkward. So that is where the cultural specificities come in. And then those oddities were not addressed adequately, so the translations were not very readable. They sounded very odd. So from then on, we talk about endotropic translations and exotropic translations. And I'm more interested, and I hope this panel will address these issues. See, the world through English.
is what we generally think of whenever we think of translations. And that is exotropic. That is Odia literature, Bangla literature. Most of these Indian literatures have been translated, are being translated into English. But there are others, in between translations among Indian languages. This is something that we do not often think of. Though Sahitya Akademi and National Book Trust have been doing a commendable job, making available different literary texts in other Indian languages. So endotropic translation is something that we need to think about, where the challenges of culture-specific expressions, notations are generally, I mean, that is the impression we have, are less in nature. It's much more difficult to translate Indian language literatures into English because of the difference between cultures. So I'll just talk about, one of my earliest exposures to translation in Odia, Tomo Kokanko Kutiro. That's from English into Odia. That's neither, unless you think of English as an Indian language. When this was translated by Udayanath Sadangi, it again happened through the textbook. When he studied in Calcutta, he was introduced to Uncle Tom's Cabin through one chapter, that is Topsy. And he was so touched by this that he thought of buying a copy of Uncle Tom's Cabin, which he eventually did. And he was so moved by it, moved to tears, that he translated it into Odia. And that translation has stayed. And, that's translation, that is a translation because of which many Odias were drawn to texts of that kind. Now, the next one was, and the 1925 is the date when he first read it, but he translated it in 1934. And since then, it's available in multiple editions, published by different publishers. There is no copyright. Nobody talks about the copyright. Then Alice in Wonderland, it was translated in many Indian languages. And the author, Lewis Carroll, first thought it when the proposal to translate Alice in Wonderland into German and French arose. Many of his friends at Oxford said, this text is untranslatable. This is a word that we all hear about whenever we think of our own works that are translated into English. Fortunately, in the context of Indian languages, because of Indians' familiarity with the English language, many of these texts are not translated. Now, I'll just mention one thing about The Wasteland. When The Wasteland was translated into Odia, or any language for that matter, it offers formidable challenges, beginning with the first line, April is the cruelest month. How do you understand this and how do you translate it into Odia? Because even in English, this becomes quite a challenge, understanding this. But there are so many languages in the wasteland that even among European languages, it's very difficult to understand the whole poem, even with translation. It has words like Da Datta Damyata and Shanti, 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 which Eliot did not translate into English. The Sanskrit words he did not translate into English. And they're left as such. But, people had to wait for the footnotes or a glossary. When this was translated by Gyanendra Verma, this is one example I must give. Oh, that Shakespearean rag. He does not do necessary research to understand what is rag. So he calls it chira kona, that is torn cloth, rag. What is that Shakespearean rag? So this is a culture specificity of a kind that needs not an equivalent word, but the understanding of the context. It is very new even in English. The Shakespearean rag, 1910, 12, that is when these rags came up.
So I'll again return to what I said right at the beginning. I would be very happy if the panelists address the question of translations between Indian languages. Thank you very much. And what I'll do is, looking at the time constraint, I think every speaker should get about 8 minutes or 9 minutes. And then we'll see if we can find some time for discussion at the end. And so I'll call upon Dr. Kirti Ramachandran. माफ कीजिएगा, ये रोशनी बहुत तेज पड़ रही है मंच पर, हम लोग देख नहीं पाते। कई बार मैंने कहा है पहले भी, आज भी कह रहा हूं, जरा इसको कम करवा दीजिए या बंद करवा दीजिए। थैंक यू। Thank you very much, Professor Satpathy. Thank you to the Sahitya Academy for having all of us here. And to you, as somebody said before the session, that we have to thank the audience first for being there to listen to what we have to say, more than to thank the other speakers. And so I'm so happy that all of you are here. And I do hope that at the end of the session, you will have taken away something valuable. When we talk about translation, I'm not an academic, I'm not a theoretician, but I'm a hands-on translator. I've been doing this for 40 years or more, translation and editing of translated texts. I translate from 3 languages, and I feel comfortable doing that because it's a challenge. Each time I'm taking up a book in Marathi or in Kannada or in Hindi, it presents a very different kind of experience, which I like to deal with, being as close and faithful to the spirit of the text and the voice of the author rather than my own perception of it. However, I'm not going into the problems of translating from Kannada, Marathi, Hindi into English, because that everybody knows what the challenges are. Everybody has talked about it at length. What I'm concerned about is translation between languages. Since most of us are bilingual, if not multilingual, by virtue of birth, migration, mobility that's available today, various reasons. I think we've got people here who, he's from Andhra, and he born and brought up in Kharagpur. He's a software engineer who writes, translates from Telugu, from Hindi, from Bangla. Why aren't we exploiting their talents? People like this must be so many in this country to get authentic translations of texts, literary texts from one. I hesitate to say regional language. I do not want to say Indian language because we have domesticated, appropriated, call it what you will, the English language and made it our own. Because I don't think anybody would deny the fact that English has become a very typical, or rather, there's a very typical English which all of us use and all of us understand without being self-conscious. As long as we are able to communicate, that's all that matters. I feel that when one translates from, let's say, Marathi into English, one is always struggling with the cultural context. Whereas if I'm translating, let's say, from Marathi into Kannada, I was just talking to my new friend over here, and I asked her about what she would understand if I said a bare forehead, or and she said, "Ha, suni mang." You don't have to say anything more. But if I was translating it into English, how would I say it? A bare forehead broke her father's heart. Why? What does a bare forehead signify? Now, that's not the problem. The problem is where kunku,
which is in Marathi, kunkma in Kannada, means something, means a lot. So a forehead minus the kunkma means something much more. You can't, the Suni Mang and the bare forehead have no connection with each other. One has a lot of emotion, a lot of sentiment. As Mr. Dinesh Sinha was saying, the culture may be very similar, but what do you do about Riti Rivaz? All those are the factors which make up a culture. And the expression of that culture is very different. When you translate from Kannada into English, and then a Marathi translation is done on the basis of that English, we're already 2 steps away from the original. Can we not do something where we have exploit the abilities of people who are multilingual? For example, if I want to translate something from Marathi into Kannada, my Kannada is very good. My target language is strong. My Marathi is adequate. If I can find somebody who's an extremely conscientious, extremely confident resource person from Marathi, I can speak and work with that person in a collaborative fashion and get that work into Kannada because I understand what the author is trying to say, what lies beneath the spoken or the written word. Because in any text, the silences are as important, if not more important, than what is said. And to be able to understand that, I think one needs to have a very sensitive resource person as well as an equally or more sensitive translator. If only we can exploit this talent that we have this way. And I say this because I'm sure there are many teachers here who've experienced this when teaching translation, that there are students who are bilingual, who have never attempted this task because they always think that translation means into English. This is what I'm really hoping that we can discuss during this panel discussion, and we can find ways to take it forward. If there is time later, I will mention specifically one project that is encouraging this kind of translation work, and maybe somebody will pick up the initiative and we can have more and more such translations between Kannada, Marathi, Hindi, Assamese, Bangla, whatever, into Marathi, Hindi, Kannada, Bangla, and Manipuri, whatever. If we can do that, I think the Sahitya Akademi would have achieved its objectives and all of us would be the richer for it. I don't think I want to add any more just now. Other people need to be given a chance. Thank you. Hello. Thank you very much, Kirti ji, for sticking to the time, the limited time given to us. And I also thank you for talking about, the translation between Indian languages. So we'll come back to that, later on. If we had followed the sequence, then the next person should have been, next speakers would have been Zameerpal Kaur. Initially, I thought these are 2 co-authors, but no, this is one name, Zameer Kaur Sandhu Bajwa. She would like to speak later. So the next speaker is Mukunda Ramarao. Kindly begin by introducing yourself. Yes, let's go. Okay, fine. Right, thank you. Namaskar and good afternoon to all of you.
I'm not a great speaker as I find the speakers here. I can just read out whatever I have made out to read. Hope you will not mind for that, right? Pardon, sir? Yeah, okay, fine. It is an honor to participate in the Sahitya Akademi's annual Festival of Letters. As a perpetual student, I humbly seek your indulgence as I share my thoughts on translations. This is an art that has existed since human communication began. Translation at its core is the act of making something accessible in another language. Even a newborn baby, when he cries, it demands a translation. Similarly, every literary work, when translated, takes a new form, sometimes a rebirth, sometimes a transformation. However, complete translation is impossible. Feelings, sounds, colors, and cultural contexts often cannot be fully conveyed. Translation is like moving a spider's web. Beautiful one is its original beauty shifts. The essence must remain intact even if some nuances are lost. Every language embodies a unique world view. Every language embodies a unique worldview. Words carry different expressions, making direct translation inadequate. Thus, a translator must not only transfer meaning, but also retain artistic beauty. Something is always lost, but something is also gained. Focusing only on losses limits our application, our appreciation of world literature. A translator acts as a bridge, a pathway to another culture. The translation process reveals the translator's engagement with the original text. The Latin root of the word translation means trans means across, and lation means carrying. Reflects this journey across cultural and linguistic boundaries. In India, translations have been crucial to literary and cultural exchange. Our epics like Ramayana have been translated into multiple languages, each version adapting to its linguistic and cultural context. These translations are rarely criticized for their differences. Instead, they are celebrated for bringing the essence of the epic to diverse audiences. Yet, challenges are abound. Key challenges in translating literary works between different cultures include cultural nuances and context. Customs, traditions, and idioms often lack direct equivalents, requiring careful adaptation. Second is untranslatable words, and expressions. Some phrases lose meaning in real translation, necessitating creative solutions. Emotional nuances. Emotions may across cultures require subtle adjustments. Grammar and syntax differences. Maintaining clarity while preserving meaning is difficult. Interpretation variability. Texts with multiple meanings pose challenges for consistency. Censorship and sensitivity. Political or religious themes must be handled thoughtfully. Maintaining author's style and voice.
The translator must capture the original tone while adapting to the target language. Wordplay, humor, and poetry, these elements are particularly hard to translate while preserving artistic integrity. Historical and social contexts. Literature often reflects specific historical settings that may not resonate with all readers. The role of the translator, is he a creator or a messenger? The balance between loyalty to the text and creativity freedom is complex. These challenges lead us to important questions. Should a translator prioritize accuracy or readability? How can a translation preserve both artistic value and cultural authenticity? While translation in the West developed into a highly structured profession, in India, we often rely on English as a bridge between regional languages. This reliance sometimes distances us from direct interlanguage translations. The need for translations is greater than ever, particularly as languages face extinctions, taking their literature and heritage with them. Moreover, we must recognize the translator's invisible labor. Translators are often unsung heroes of literature, ensuring the voices from one culture can resonate with another. Without them, entire literary traditions would remain inaccessible. Translators do not merely transfer words, they facilitate intercultural dialogues, influencing the way we understand foreign texts. Translation also plays a crucial role in contemporary global literature. In a world increasingly interconnected, literature has the power to build bridges of empathy. Translators must act not just linguistic experts, but also as cultural diplomats, navigating the fine balance between fulfillment to the text and the demands of the new audience. Ultimately, translation is not an exact science. It is an art, an approximation of the original. A good translation captures not just words, but also emotions, cultural depth, and an artistic essence. As Octavio Paz rightly said, every text is unique and at the same time is a translation of another text. Translation fosters unity in diversity, allowing literature to transcend boundaries. With this thought, I extend my gratitude to Sahitya Akademi for this opportunity to reflect and learn from the esteemed scholars here today. Thank you all. So, should I introduce myself? I not talk about me. Should I say a few words about me? Yes, please. Actually, I'm Mukunda Ramarao from Hyderabad. I'm not a scholar wherein in any language or anything. I'm actually a computer science professional. So out of interest, I come to the literature and translations. So after my retirement, the railway reservation project, the reservation software, I was one of the key members developing that. So I take pride in doing that. And after that, I've come to the literature, and moreover, I'm born and brought up in West Bengal. So even in Telugu also, I feel that, I'm not that a Pandit, a great Pandit wherein, but somehow
out of curiosity and out of interest for the subject. I have translated from Bangla to Telugu. So Nahanyate Maitri Devi's book I have translated novel. Then Maitri Devi's Nahanyate Bengali novel I have translated to Telugu. And the Indian languages poetry, so 40 languages of Indian languages poetry are translated to Telugu. And Bhakti poetry in the Middle Ages, that I have translated to Telugu. Yes, sure, sir. Sure. Thanks a lot. Sure. Thanks a lot. A big hand to him. Thank you. Next, I will call upon my friend Rajendra P. Mishra, who has won almost every single prize on translation in India. So he has got all those prizes. He primarily translates from Odia into Hindi, and perhaps vice versa, from Hindi into Odia. No. So please, I hope to hear from you what your experience. धन्यवाद। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य उत्सव के अवसर पर आयोजित इस सत्र में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं साहित्य अकादमी के प्रति आभारी हूं। हमारे बीच जो हमारे अन्य मित्र हैं वक्ता कीर्ति जी, बाजवा जी, रामाराव जी, राना नायर जी और प्रोफेसर रंजीत साहा जी, मैं आप सबका भी अपनी ओर से स्वागत करता हूं और अपनी बात 6-7 मिनट में खत्म करूंगा। मैं इसलिए कहीं भटक न जाऊं, इसलिए 2-4 लिख लाया हूं। लिख लाने से ये होता है कि आदमी भटकता नहीं है, उसी रास्ते पे चलता है। सांस्कृतिक रूप से भिन्न भाषाओं में, जैसा कि विषय दिया गया आप देख रहे होंगे, भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के अनुवाद की चुनौतियां, साहित्यिक कृतियों के अनुवाद की चुनौतियां। भाषा सांस्कृतिक जीवन की आत्मा होती है। भाषा के जरिए मनुष्य का मस्तिष्क और हृदय एक दूसरे से जुड़ा होता है। जब मैं विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में 3 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर गया था भारत से, तब एक दिन मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा, मॉरिशस में एक हिंदी प्रचारणी सभा है मॉरिशस में, ने अपने पुरस्कार वितरण समारोह में मुझे आमंत्रित किया था। उनके भवन में प्रवेश करते ही, जब मैं उनके भवन में प्रवेश किया तो मेरी नजर दीवार पे पड़ी जहां लिखा था, भाषा गई तो संस्कृति गई। अगर आपकी भाषा गई तो आपकी संस्कृति नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। यह मॉरिशस की हिंदी प्रचारणी सभा का आदर्श वाक्य है। उनका मानना है कि अपनी संस्कृति को बचाकर रखना है तो अपनी भाषा को बचाकर रखना होगा, क्योंकि भाषा ही वो माध्यम है जो संस्कृति को जिंदा रखती है। भाषा के बिना संस्कृति की अभिव्यक्ति असंभव है। अपनी इसी आदर्श वाक्य की शक्ति के सहारे मॉरिशस वासियों ने अपने देश में भारतीय संस्कृति को बहुत ही सम्मानपूर्वक ढंग से सजोकर रखा हुआ है। वहाँ तेलुगु भाषी भी हैं, वहाँ मलयाली भाषी भी हैं, वहाँ हिंदी भाषी भी हैं, और हर भाषा भाषी का मंदिर है। सब ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। वहाँ की सरकार सभी जितने भी भाषा भाषी हैं, हर भाषा भाषियों को साल में अनुदान देती है कि अब आप अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचा कर रखिए और मंदिर बनाइए, मंदिर को बढ़ाइए, भाषा को बढ़ाइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए। ये उस देश में होता है और भाषा के जरिए उन लोगों ने इसको बचा के रखा है। संस्कृति की परिभाषा व्यापक है, आप सभी जानते हैं। व्हाट इज कल्चर बोलने से किताबें भरी पड़ी हैं, उसी में से हमको निकाल के लाना पड़ेगा। संस्कृति की परिभाषा व्यापक है।
यह महज चित्रकला, संगीत और स्थापत्य नहीं है। सुप्रसिद्ध अंग्रेज नृतत्व शास्त्री एडवर्ड बर्नेट टाइलर का कहना है कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित समस्त ज्ञान, विश्वास, नैतिकता, नियम, प्रथा, रीति रिवाज इत्यादि का समाहार ही संस्कृति है। इस कथन से संस्कृति की व्यापकता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। कुछ छूटा नहीं है इसमें। आपका ज्ञान है, आपका विश्वास है, आप नैतिकता आपकी है, आपके नियम है, आपकी प्रथाएं हैं, आपके रीति रिवाज हैं, ये सब संस्कृति है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम जो भी कुछ समाज से सीखते हैं और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आगामी पीढ़ी में संचरित करते हैं, उसी का नाम संस्कृति है। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृति किसी समाज या जाति की जीवन पद्धति होती है। इस सांस्कृतिक वैभव को हमारे साहित्यकारों ने काल कालांतर से विकसित किया है, अपनी कृतियों में सहेज कर रखा है। चूंकि इस सत्र का विषय, जैसा कि आप जानते हैं, सांस्कृतिक रूप से भिन्न भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के अनुवाद की चुनौतियां रखा गया है, इसलिए मैं उड़िया भाषा की साहित्यिक कृतियों के हिंदी अनुवाद से जुड़ी कुछ चुनौतियों पर चर्चा करना चाहूंगा। मैं झटकूंगा नहीं, केवल उड़िया साहित्य से हिंदी में अनुवाद करते समय मुझे जो जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी दो भाषाएं एक जैसी नहीं होती। ध्वनि, शब्द, अर्थ, उच्चारण, लय, पदबंध, वाक्य विन्यास, मुहावरे, लोकोक्तियां, अलंकार, छंद आदि के स्तर पर भाषाएं एक दूसरे से काफी भिन्न होती हैं। हर लक्ष्य भाषा का स्रोत भाषा से भिन्न अपना सांस्कृतिक तर्क होता है। इसलिए अनुवाद में मूल से विचलन का, मूल से डेविएशन होना संभव है। आप मूल से को आपको डेविएट होना ही पड़ेगा। आप चाहे जितने बड़े अनुवादक हों, थोड़ा ना थोड़ा आपको विचलन यानी कि डेविएशन आएगा अनुवाद करते समय। जब मैंने उड़िया के प्रख्यात कवि डॉक्टर सीताकांत महापात्र की कविताओं का उड़िया भाषा से हिंदी में अनुवाद करना शुरू किया, तो मेरे समक्ष तरह तरह की चुनौतियां आने लगी। सबसे पहले मैंने उनका अनुवाद किया, उनके बाद मैंने कईयों का अनुवाद किए हैं। उसमें भी सांस्कृतिक उतना नहीं आता जितना सीताकांत जी में मिला मुझे। तो मेरे चुनौतियां आने लगी। महापात्र जी की कविताओं में सांस्कृतिक संदर्भों की भरमार है। उनकी कविताओं में भागवत, रामायण, पौराणिक पात्रों व बहुत से शब्द ऐसे, एक एक शब्द में एक एक संस्कृति समाई हुई है। एक एक शब्द में एक एक संस्कृति समाई हुई है। उड़िया में शब्द उनके कविता में आया स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार, अब उसका अनुवाद क्या करेंगे हम हिंदी में? हम स्वर्ग द्वार करेंगे तो हिंदी वाले क्या समझेंगे? अंग्रेजी वाला कर देगा गेट टू हेवन। किंतु स्वर्ग द्वार, उड़ीसा में अगर आप स्वर्ग द्वार बोलेंगे, इसका मतलब पूरी का शमशान घाट, और कहीं का शमशान नहीं, पूरी का शमशान, उसको बोलते हैं स्वर्ग द्वार। धांगड़ा, आदिवासी शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। धांगड़ा, धांगड़ी, युवा, आदिवासी युवा को बोलते हैं धांगड़ा, युवती को बोलते हैं धांगड़ी, धरती, धर्मो, इस तरह आदिवासी शब्दों का भी प्रयोग कविताओं में है। पखाल भात, पखाल बोलने से पानी में रात को भात को भिगो देते हैं, फिर सुबह लोग खाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिलाते हैं, मिला खाते हैं, साग है, सब्जी है, बड़ी भाजा है वगैरह करके पखाल भात खाते हैं। पूरे उड़ीसा में पखाल भात का प्रचलन, गर्मियों में पखाल भात खाएंगे ही खाएंगे। आप चाहे जिस घर में चले जाइए, बड़े से बड़े मिनिस्टर के यहाँ चले जाइए, जिसके यहाँ भी चले जाइए, चाहे गरीब से गरीब आदमी के यहाँ जाइए, आपको पखाल भात जरूर मिलेगा। तो उसको बताना पड़ता फुटनोट में। चित्रोत्पला, अब चित्रोत्पला आ गया उनकी कविता में। हमारी चित्रोत्पला क्या है? हम गंगा, जमुना, कावेरी जहां बैठी तब जानते हैं। उनसे पूछा हमने चित्रोत्पला क्या है सर? तो बोले मेरे गांव की नदी है। अब उनके गांव में जो उनके गांव को जानता है वो जानेगा उस वहां पर ये नदी है, इसको हम लोग बताना पड़ेगा। चित्रोत्पला नीचे बताना पड़ेगा फुटनोट में हमको कि भाई ये एक नदी का नाम है। अब उड़िया शब्दकोश में कजल पाखी, चित्रोत्पला, पूची। कजल पाखी एक पक्षी है, पाखी माने पक्षी, कजल माने काली, कजरौटी हम लोग बोलते कि हिंदी में। मैंने उनसे पूछा ये कजल पाखी क्या है? तो बोले मैं तो अंग्रेजी में बता सकता हूँ, ड्रोंगो बोलते हैं उसको। हमने कहा ड्रोंगो, फिर मैंने शब्दकोश में ढूंढा उसको, ड्रोंगो को लिखा हुआ था मीनिंग हिंदी में एक लंबी पूंछ वाली काली चिड़िया।
तो फुट नोट में दे दिया हमने भाई, ऊपर कजल पाक के लिख के और नीचे दे दिया लंबी पूछ वाली काली कजरोटी हम लोग बोलते हैं हिंदी में उसको। अच्छा, तो ऐसे में कवि अगर है तो कवि से पूछ के अनुवाद कीजिए, कवि नहीं है शब्द को ढूंढिए, नहीं तो और दूसरे कवि से पूछिए, फिर फुटनोट दीजिए अपने। ओडिया के कुछ कथाकारों का ध्यान दलित और उपेक्षित वनवासी आदिवासियों के दुर्दशा और शोषण की ओर गया। पहले उनकी संवेदना अपने इर्द गिर्द के सामाजिक परंपराओं और प्रचलित संस्कृतियों को अभिव्यक्त करने तक सीमित थी। जब उनका ध्यान अपने समाज से दूर जंगल पहाड़ों की ओर गया, उन दूर दराज के आदिवासी समाज को केंद्र में रखकर भगवती चरण पाणिग्राही, गोपीनाथ महांती, प्रतिभा राय आदि साहित्यकारों ने शहरी सभ्यता से दूर उन असंबद्ध, अशिक्षित, अवहेलित वनवासी आदिवासियों और दलितों की संस्कृति एवं जीवन धारा को पूरी ईमानदारी के साथ उड़िया साहित्य में पेश किया। इसी तरह वनवासी बोंडा समाज और उनकी संस्कृति को पूरी संवेदना के साथ प्रस्तुत करने का स्तुत्य कार्य किया डॉक्टर प्रतिभा राय ने अपने आदिवासी उपन्यास में। अब इनमें शब्द आते हैं, आदिवासियों के शब्द हैं, धर्म उनका उनके धर्म को लिया गया, उसमें कैसे अपने पूजा पाठ कैसे करते हैं, उनका खान पान क्या है, उनके पर्व त्योहार क्या है, शिकार करने जाते हैं तो कैसे शिकार करने जाते हैं, विवाह कैसे गुदुलिया विवाह होता है, लड़की को लेकर लड़का भाग जाता है, फिर विवाह करता है, फिर लड़के वाले पार्टी देते हैं, लड़की वाले पार्टी, लड़के वाले पार्टी देते हैं, पूरे गाँव को शादी करता है लड़का तो, और कुछ पैसा भी देता है लड़की के पिता को। तो वहाँ के अपनी परंपरा रीति रिवाज है ये गुदुलिया विवाह, सामाजिक रीति, उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ उनकी भाषा के कुछ शब्दों को भी ज्यों का त्यों कथानक में पिरोया जाता है उड़िया साहित्य में। अब ये शब्द उड़िया के शब्दकोश में नहीं मिलते हैं। ऐसे में कथाकारों के से उन शब्दों का अर्थ पूछकर फुटनोट में देकर अपना अनुवाद कार्य संपन्न करना पड़ता है। आदिवासी संस्कृति के अलावा उड़ीसा में श्री जगन्नाथ संस्कृति, हमारी जगन्नाथ संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है उड़ीसा की। जगन्नाथ संस्कृति को आधार बनाकर ओडिया के साहित्यकारों ने कविता, कहानी, उपन्यास और गीत लिखे हैं। हमारे बीच गायत्री वाला पंडा, इन्होंने भी लिखी कविताएं, उसमें भी हमारी जगन्नाथ संस्कृति की झलक मिलती है। इस विषय पर सुरेंद्र महांती हमारे उपन्यासकार हुए, कथाकार, उनका नील स्टाइल उपन्यास है, पूरा आदिवासी संस्कृति माने हमारे जगन्नाथ संस्कृति पे आधारित है, जगन्नाथ मंदिर पे। नील स्टाइल उपन्यास का नाम है, नील स्टाइल। इसमें श्री जगन्नाथ संस्कृति का विस्तृत विवरण दिया गया है। उपन्यास में प्रयुक्त जो शब्द आते हैं उसमें स्नान पूर्णिमा, अब स्नान पूर्णिमा क्या है आपको बताना पड़ेगा, हम लोग आसानी समझ जाएंगे। पूर्णिमा के दिन जो स्नान करते हैं उसको स्नान पूर्णिमा बोलते हैं, किंतु क्यों पूर्णिमा के दिन स्नान करते हैं, इसका क्या महत्व है, इसकी संस्कृति कहाँ है। ओणोसर, ऐसे ओणोसर शब्द है, और बोढ़ा शब्द है, गुंडीचा है, निर्माल्य है, ये सब क्या है, ये सब सांस्कृतिक शब्द है जो कि जगन्नाथ संस्कृति में प्रयुक्त में आते हैं। इनके शब्द के अर्थ भी आपको ढूंढने पड़ेंगे और समझाना पड़ेगा अनुवाद करते समय, या फुटनोट देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तब जाके आपका अनुवाद सही होगा। ऐसे में फुटनोट देकर काम चलाना पड़ता है। अतः ये कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक रूप से भिन्न भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के अनुवाद में अनेक चुनौतियां हैं, पर एक दूसरे की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद के जरिए ही हम आपसी साहित्य, संस्कृति, प्रगति, परंपरा और रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और एक दूसरे के साहित्य से परिचित हो सकते हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सुना, धन्यवाद सर। Dr. Mishra, for sharing your experience of translating Odia literary texts into Hindi. One of the ways in which you met the challenge of culture-specific words that you came across was to understand them yourself and then put them in a footnote. You know, that's something that many other translators do not often agree with. Publishers sometimes want to minimize the glossary and notes on specific words. So if there is any other way out, maybe the other translators can share their experiences with us.
I'll now request Professor Rana Nayar to make his presentation, which is to be brief. We are old friends from the time that we are teaching respectively at Delhi University and Punjab University. I have read some of his works, and I have also listened to his very impressive presentations at different seminars. So look forward to hearing you. Thank you, Professor Sumanyu Satpathy. I greet all my panelist friends on the stage and my naman to members of the audience. I read somewhere that the one who listens has to be accorded more respect than the one who speaks. I was reflecting, sitting there, listening to my friends. I was reflecting on the topic and I asked myself a simple question. Is it possible for us to talk about our own languages when we talk about culturally disparate languages? Because my understanding of Indian languages is, despite the fact that most of the Indian languages fall within the two broad categories of Indo-European and Dravidian, that they're more or less sister languages and they have a lot in common with each other. So it was a little difficult for me to actually reflect on another language. Another personal limitation is that all my life, let me say for the past 35 years, I've only worked with two languages. Though of course I'm familiar with three, but I've only worked with Punjabi and English. And therefore much of what I'm going to say now is based on whatever little I have learned after doing translation over the past 35 years. When I reflect on the relationship between Punjabi and English, because this is a question which popped up so many times in my mind when I was doing translation, a certain kind of irony was not lost on me. It's ironic that today when we talk about the relationship between Punjabi and English, we find that it's an unequal, asymmetrical relationship. For the simple reason because Punjabi is predominantly a regional language and English is an international language, whether or not we see it as an Indian language. But I think it has by default become an Indian language. But it's interesting that in English, we had the first poet somewhere in 14th century. We all recognize Chaucer. Whereas in Punjabi, we had first poet somewhere in 12th century. So the point I'm trying to make is, it's ironic that Punjabi started off much earlier than English, but then somewhere in course of this historical journey, it lost out to English. And we know the reasons for it. I'm not really going to go into the reasons as to why English spread. We all know how we need to either blame imperialism or British need to thank imperialism for it. But it's interesting that when I think about any relationship between two languages, I find that even when we are talking of two sister languages, let's say Punjabi, Hindi, or Marathi, or Telugu, Malayalam, so on and so forth, I find that there is some kind of an inherent imbalance there. There's an asymmetry there. Ask me why. We all love our language. There are affective reasons for it, not social reasons, but there are affective reasons for it because we love our own language to distraction. And that's the reason why we choose to locate ourselves in our own language and work our way into different languages. Now, when we are talking about asymmetrical relationship, because reason why I'm emphasizing this is for also another factor, because translation, one of the major challenges that we find is we have to find equivalence. People have talked about linguistic equivalence. Mishra ji was
elaborating on it. Professor Sumanyu Satpathy has pointed out cultural specificity. All languages, I feel, are unequal because of the kind of value we attach to our own language. And we think that the other person's language, even though it may have a lot in common with our own, doesn't have the same value. One of my regrets is that, you know, we haven't understood this basic fact about languages, that they are modes of communication. And I think translators probably are the best persons to actually underline this fact, that it's a mode of communication and therefore it should be. Of course, cultural differences will exist, will persist, but all languages are equal at that level. And probably I'm saying this in Sahitya Akademi, this is the place where it needs to be said that I wish, my dream is if we can create a republic of languages where all languages enjoy the same status and the same value. But that calls for a very major revolutionary change in the mindset of the people. And I think I leave it to future. Now, what are the kind of asymmetrical equations we are talking about? One is some kind of a cultural sociology. Let me elaborate on it a little. What do I mean by this? When I translate from Punjabi into English, I find that, and this goes, if you allow me to say that, it goes for most of the Indian languages and most of the Asian languages also. We think differently. We constitute relationships differently. We have what we call kinship culture. चाहे हमें रिश्ते निभाने नहीं आते हैं, चाहे हमारे रिश्तों में बहुत सी hypocrisy और deceit और dishonesty है, लेकिन फिर भी रिश्ते हम define करते हैं. So we give name to our relationships. हमारे अंकल आंटी नहीं होते हैं, वहाँ मौसी भी होती है, बुआ भी होती है, और पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो बेबे भी होती है, बीबा भी होती है, बापू भी होता है. We have some kind of a special emotion that we associate with each relationship, and that's exactly what we value. Now, one of the major challenges that comes in is, how do you deal with this cultural sociology? Do you actually dispense with all that as part of kinship culture and standardize it? Or you try and preserve? If you try and preserve cultural specificity, as Dr. Satpathy was pointing out, then the problem is you don't translate into target language. फिर वो एक transaction नहीं रहती है दो source और target के बीच में, because in the process of translation, and I'm sure all my translator friends would side with me when I say that, it becomes a third language. Translation, I have believed over the years, is done in the liminal space, in the third space. George Steiner भी कहते हैं कि ये third language create होती है through the process of translation, जिसको कुछ हमारे Indian thinkers ने, translators ने जब theorize करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि translators या translated text एक त्रिशंकु है, वो लटकते हैं बीच में, ना हेवन में है, ना जमीन पे है, बीच में कहीं है. सो हम बीच के लोग हैं, in between. That is one major assumption that I think we need to keep in mind. The translation is never done from source into target, but in the process of translating, we create the third language. Now, what is this third language? Which has a lot of ideas, concepts from the source, and they are carried over into the target. आजकल मैं एक टेक्स्ट पे काम कर रहा हूं जिसका मैन्युस्क्रिप्ट दिनेश जी के पास पहुंच चुका है. गुरदयाल सिंह जी की पहली नॉवल थी मड़ी दा दीवा, and I spent sleepless nights thinking about whether I could find cultural equivalent
for muddy. I have none. Because that idea, that concept simply doesn't exist in English language. It's such a homespun idea that it only exists in certain part of the culture. People who are familiar with the rural landscape of Punjab would probably be able to relate to it. There is another dimension to this asymmetry, which of course has to do with cultural ecology. हम भूल जाते हैं जब हम रिश्तों की बात करते हैं कि मौसम भी उतना ही अफेक्ट करता है राइटर को, या उतना ही पार्ट होता है ऑफ राइटर्स मिल्यू जितना कुछ और. मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, seasons are understood very differently in our own context than they are in England. They have 4, we have 6. So these are some of the challenges that we have to encounter. Apart from that, I think the major challenge is most of our languages, writers do not write in the standardized language. They write in the dialect. Now, translating from a dialect, for instance, Gurdiyal Singh used to write in Malwai, and translating a dialect of Punjabi into whatever you may call standard English or whatever I know of standard English, that becomes a huge challenge again. Finally, towards the end, I would like to say, yes, translations are happening. It's a matter of celebration. Sahitya Akademi organizes these events every year. It's doing seminal work in the area of translation. We have National Book Trust as well, and we have National Translation Mission. They are translating knowledge texts. But I think now, because we have been engaged in this business of translation for over 50 years or more, time has come for us to actually look for indigenous Indian tropes for theorizing translation. Hamara jo dependence hai on Western theory is excessive. So there are translators who are theorizing it, but I think we need to pay little more attention to it. Thank you so much, because I've got the signal. God bless you all. Thank you, Professor Nayar. It was wonderful listening to you, and I didn't want to interrupt your flow. Though we don't agree on a couple of points, we'll come back to that later. I'll now request Professor Ranjit Saha to make his presentation. Kindly introduce yourself briefly. I'm doing this to cut down on time. I didn't want to introduce the speakers because most of you are well known here. And it'll be good if you can just say a few words about yourself. नमस्कार। आदरणीय मंच, सामने बैठे हमारे प्रबुद्ध श्रोतागण, इनमें से कई महत्वपूर्ण लेखक हैं, प्रतिष्ठित अनुवादक हैं, कवि हैं, सर्जक हैं। मैं कुछ विनम्रता पूर्वक रखना चाहूंगा। थोड़ा सा समय अगर 5-10 मिनट में ज्यादा लूं तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मित्रों, अनुवाद पर साहित्य अकादमी की ये जो अभी चल रही है संगोष्ठियों का एक बड़ी श्रृंखला, उसमें 4 सत्रों में अनुवाद के बारे में विद्वान चर्चा करने वाले हैं। हम लोगों के सत्र के बाद ही एक और सत्र है और इसके बाद भी है। अभी कुछ संस्थाओं का नाम लिया गया, साहित्य अकादमी और ट्रांसलेशन मिशन, नेशनल बुक ट्रस्ट, पहले भारतीय ज्ञानपीठ का भी नाम लिया जाता था।
तो ये सारी संस्थाएं अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी असुविधाओं के बावजूद ये काम कर रही थी। लेकिन अनुवाद विधा ये हमारे लिए आज तक एक अपरिचित विधा बनी हुई है। क्या चाहते हैं हम अनुवाद से? इसकी कोई भारतीय जड़ है क्या जिसे आधार बना के हम उसे विश्लेषित कर सकते हैं? शायद नहीं। शायद इसलिए कि अनुवाद को हम लोगों ने इसके कई छद्मवेशों में संभाल के रखा है, और अनुवाद अनुशासन नाम की जो चीज है, हम उससे अपने पाठकों को, अपने अध्येताओं को, अपने शोधकर्ताओं को ठीक से परिचित नहीं करा पाए। यह संस्थाओं का दोष है। इसलिए कभी कभी लगता है कि ये जो विधा है ये बड़ी अभिशप्त विधा है, एक परजीवी विधा है, पैरासाइट विधा है। हम इसकी एक स्वतंत्र इयत्ता या सत्ता स्थापित नहीं कर पाए हैं। कभी संस्कृति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी विरासत के नाम पर, और कभी पुरानी जो हमारी एक परंपरा रही है, वेद, उपनिषद, पुराण, सब खंगाल जाते हैं। लेकिन हमें कहीं उस तरह से सुविधाजनक कोई स्थान प्राप्त नहीं होता है कि हम अनुवाद से क्या जोड़ना चाहते हैं। क्या हम जैसे अनुवादक पैरासाइट है? क्या हम कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते? क्या हम 2M दर्जे के नागरिक रहे हैं? बहुत साल तक कहा गया, दसियों साल तक। लेकिन अब हम जैसे कुछ लोग थोड़ा सा गंभीरता से इसके बारे में सोचते हैं, कुछ प्रश्न भी उठाते हैं और उन प्रश्नों से टकराने की कोशिश भी करते हैं। और मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था, खाला का घर नहीं। अनुवाद जो है आपके मौसी का घर नहीं है ना, और माँ तो है ही नहीं इसकी, क्योंकि मैंने कहा ना कि जड़ कहाँ है इसकी। क्या करना चाहते हैं अनुवाद से? क्या किसी कृति को उल्था कर देना, चाहे वो पद्यानुवाद हो, गद्यानुवाद हो, चाहे शब्दानुवाद हो, चाहे पदानुवाद हो, चाहे निर्वचन हो। इसको आप अंग्रेजी में इसके पारिभाषिक शब्द मिल जाएंगे कि क्या ये हम मेटाफर में बात कर रहे हैं, क्या हम उसको गद्य में ढाल रहे हैं, क्या हम उसको पद्य में ढाल रहे हैं। इतनी असुविधाएं हैं अच्छा अनुवाद करने, यानी जिसको हम लोग समकक्ष या समतुल्य अनुवाद कह सकते हैं। हमेशा अनुवादक को प्रश्नवाचक के बीच बिठाया जाता है। अरे ठीक है, आपने कर दिया, देखते हैं। प्रकाशक आपसे खुश नहीं है, पाठक आपसे खुश नहीं है, आलोचक आपसे खुश नहीं है। ये स्थिति है, और समाज में जो आपकी स्थिति है वो हम सब जानते हैं। यानी पहले तो कहा जाता था कि अनुवाद का मतलब 2 रुपया बिकता है ना, एक पेज का 2 रुपया ले ले भैया, कर दे। ज्ञानपीठ जैसी संस्था के लिए अनुवाद किए हैं मैंने, 50 साल से कर रहा हूं, और वहां भी कहा जाता था कि अरे जो अंश छोड़ दीजिएगा, जल्दी कीजिए। ये है हालत। इसलिए कुछ उपन्यासों के जो अंश जरूरी थे और शायद कठिन भी थे, उसे मुझे छोड़ना पड़ा कि भैया ले लो, कर दो, अरे हो जाएगा, ठीक है, अरे लोग पढ़ लेंगे। तो ये जो स्थिति है, कोई नियंत्रण नहीं है कि प्रकाशक के पास एक संपादक हो कि भाई तेलुगु की कोई कृति आई है, इसकी जरा जांच करे, परख करे, इसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, इसके जो व्रत है, इसके जो उत्सव है, इसके जो व्यवहार है,
इसमें जो जेवरात के उल्लेख आए हैं, इसमें जो खान पान का जिक्र है, इसमें जो परिधान का जिक्र है, क्या हम उसकी जांच कर सकते हैं? ये आप जानिए कि बड़ा बड़ा नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, लेकिन जब उन्होंने दुर्लभ बंधु का अनुवाद किया शेक्सपियर का, इतनी छूट ली, इतनी छूट ली। मैं जरा सा एक वो पढ़ देता हूं वंश कि कितनी छूट ली उन्होंने, तो सब कुछ याद रहता नहीं है। पहले छूट कि जो कालखंड था वहां से उठा के वो भारत में ले आए, उसकी परिभूमि बदल दी, उसका परिपार्श्व बदल दिया, उसके पात्र बदल दिए। एंटोनियो अनंत, बेसेनियो बसंत, सेलेरियो सरल, सोलनियो सलोने, पोर्शिया पुरश्री, नेरिसा नरश्री, शैलोक शैलाक्ष, ड्यू मंडलेश्वर, ये बदल दिया। उससे भी उनका जी नहीं भरा। वो पोशाक की बात कर रहे हैं, उसका पहनावा हवाला देते हुए पुरश्री यानी पोर्शिया कहती है, उसका पहनावा कैसा बेडोल है। उसने अपने अंगरखा को मेवाड़ से मोल लिया। मेवाड़ कहां से आ गया? पाजामा मथुरा में बनाया है, टोपी गुजरात से मंगनी लाया है। तो ये यानी अगर उनका बस चलता तो वो केक, ब्रेड, स्नैक्स, बर्गर, पुडिंग, हॉट डॉग और जो और भी जो नई नई चीजें आई हैं, उसको वो पता नहीं खीर में, समोसे में, जलेबी में बदल देते, इतना। तो ये एक जो अराजकता की स्थिति थी, तो मैंने कहा ना कि विधा अराजक रही हमारे यहाँ। कोई भारतेंदु मंडल का, इतने बड़े बड़े अनुवादक हो गए, किसी मित्र ने उनका हाथ पकड़कर नहीं कहा कि बंधु ये आप क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। और सचमुच में मजाक बनाया। तो ये जो भारतेंदु हमारे लिए वरेण्य है, श्रद्धेय है, उनका ये, उनकी ये करतूत हम कहेंगे, कारनामा है, ये अनुवाद नहीं है। लेकिन उसके बाद की परंपरा देखिए, रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने बुद्ध चरित का बहुत अच्छा अनुवाद किया, लेकिन जब शशांक का अनुवाद करने लगे राखालदास बंदोपाध्याय का, उसका क्रम बदल दिया कथा वस्तु का, उसकी भूमिका का अनुवाद ही नहीं किया और उसकी भूमिका अपने से लिख दी, अपने भूमिका चला दी उसमें। और अंत में तो और गड़बड़ की, जहां शशांक मर गया था कथानायक, उसको फिर से जीवित कर दिया। और उसके बाद यही नहीं रुके, उसको फिर उन्होंने बौद्ध से शैव बना दिया। ये कैसे संभव हुआ भाई? किसने आपको ये इजाजत दी? तो ये सब चीजें जो है, इसको हम लोग झेलते रहे। तो जब आपके सामने कोई मूल्यादर्श नहीं होगा, एक ऐसा, मैं अगर वो कहूं तो अज्ञे जी ने भी ये शैतानी की है, बिल्कुल की। ये जो उन्होंने रेजिग्नेशन का जो अनुवाद किया, त्यागपत्र जैनेन्द्र जी का, वहां बड़ी छूट ली उन्होंने, जो पहले तो 67 में अनुवाद किया उन्होंने। और शायद जैनेन्द्र जी इस वाकये को नहीं उठाना चाहते थे, हालांकि दोनों दिल्ली में रहते थे, मिलते जुलते रहते थे। जैनेन्द्र जी को थोड़ा सा तो आक्रोश व्यक्त करना चाहिए था, सात्विक आक्रोश, कि अज्ञे तुम ये क्या कर रहे हो। अज्ञे जी ने लिखा कि मैंने जो कुछ किया है जैनेन्द्र जी की सहमति से किया। और फिर कई जगह उन्होंने फिर 1980 में ऐसे अंश जो लोगों ने उनको एक तरह से रेखांकित किए, उसको हटा करके फिर उन्होंने 1980 में उन सब चीजों को दोहराया, थोड़ा बेटर किया। तो अगर 1980 वाला ही बाद में उन्होंने प्रकाशित किया होता तो इस तरह की किरकिरी नहीं होती। तो मित्रों, ये सब चीजें जो है ना, हम लोग जो हिंदी का जो समाज है, अब क्या किया जाए? इसकी कोई आवाज नहीं है कोई आवाज, आज तक आवाज नहीं है। हम लोग भले दुनिया भर के राजभाषा और हिंदी दिवस और वो सब करते रहे, वो बात है कि चलती है हिंदी और पहुंचती है अंग्रेजी, ये स्थिति है।
तो आप जब कहते हैं कि भाई हिंदी की रचनाओं का अनुवाद होना चाहिए, कि बड़ा इसको कहा गया है कि ये तो आकर भाषा है, रिजर्वायर की भाषा है। अगर कोई अच्छा अनुवाद होता है, मैं 2 मिनट और लूंगा, अगर कोई अच्छा अनुवाद होता है तो मैंने देखा, मैं साहित्य अकेडमी में 21 साल तक काम कर चुका हूं, इसका उपसचिव रहा हूं, इसलिए मैं जो कह रहा हूं वो थोड़ा सा कटु भी है और थोड़ा सा कटु मधुर भी है। ये मेरा सब देखा हुआ है। आज भी जो स्थिति है शायद वो हताश करने वाली है। तो इसलिए क्योंकि अनुवादक जो देता है करके वो लोग काम चलाते हैं। अब कोई विशेषज्ञ बुला लिया, अरे जरा देख लीजिए इसको, यार छापना है, नहीं करना है, वो करना, हो गया। हमने भी बहुत पाप किए हैं यहाँ, सचमुच में, और वो दबाव के चलते। अनुवाद की जो एक मांग होती है, जो पहचान होती है, जो आपकी भाषा को भी सुप्रतिष्ठित करती है, वो स्थिति हम खो चुके हैं। मेरी एक किताब है रविन्द्रनाथ ठाकुर पर, नेशनल बुक ट्रस्ट से। मैंने कई बार वहां के अधिकारियों को कहा कि भाई ये मैंने बहुत पहले 1995 में अनुवाद किया था, थोड़ा सा इसको मैं और रिवाइज करना चाहता हूँ। उसके 16 संस्करण हो गए, बहुत पढ़ी जाती, अंग्रेजी से ज्यादा पढ़ी जाती, लेकिन वो कहते रहे चल रही है, क्या जरूरत है, फिर हमको कंपोज कराना पड़ेगा। तो ये सब स्थिति हम जैसे लोग जो थोड़े प्रभावी भी हैं और थोड़ा आपका नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो भी हम लोगों की बात नहीं मानी जाती। तो इसलिए जो सामान्य अनुवादक है उनसे मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस क्षेत्र में आना है तो एकदम कमर बांध के आइए। बहुत दुखद स्थिति है। अभी मैं कल्चरल पारिभाषिक शब्दों की बात करूं तो उसमें इतनी छूट ले जाती है ना। हम लोग बराबर कहते हैं कि भाई सांस्कृतिक अनुवाद होना चाहिए, पारिभाषिक अनुवाद होना चाहिए, लेकिन उसमें इतनी छूट कुछ का कुछ कर देते है ना। थोड़ी बहुत हमने भी गलतियां की होंगी, लेकिन कोई बताने वाला उस समय नहीं था, या आज तक नहीं बताया है कि भाई जो ये जो है ना शिवदाड़ा, शिवदाड़ा का अर्थ रीढ़ होता है। ये मुझे 30 साल के बाद पता चला। तो ये जब अगर आप इसकी स्थिति है ना, कोई कौन पढ़ रहा है आपकी किताब को, कोई पढ़ रहा है या उलट पुलट के देख रहा है या आपको खुश कर रहा है कि भैया ठीक है, अरे आप लिखते रहिए, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, धन्यवाद। तो ये जो एक तरह का अनुवाद के साथ हम लोग रक्षाबंधन खेल रहे हैं, है ना, इससे बचना होगा। और थोड़ी सी मेरी बात को अगर आप लोग अन्यथा भी ले रहे हैं तो ले लीजिए, अब हम लोग का कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। ये अनुवाद नहीं है बंधु, आपदा है। Thank you, Professor Saha. On the subject of taking liberties with the original, there have been two opinions. There are some who take the liberty. There are some who take liberties, and other translators think that they have to be faithful to the original. But Vartandu Harishchandra met his match in Odisha when his play. Natak Bharat Durdasa was translated by Raja Vikram Dev into Odia as Utkal Durdasa. So he completely changed it to Odisha. It was a literal translation otherwise, but he contextualized it very differently. And insofar as these names are concerned, our highly respected poet translator Mahadhara Mansingh also was talking about Desdemona being Dasyu Damana. And he tried to change the names into Odia sounding names. So there have been all these cases. The Tempest, the first Shakespeare play that was translated into Odia was The Tempest, and it was called Bonnobala, in line with Sakuntala. So thank you very much. Now I will request Dr. Professor Kaur, please introduce yourself.
आज के सेशन में उपस्थित आज के सभापति जी, इस सभा के अध्यक्ष जी, मेरे सीनियर पार्टिसिपेंट्स, सभी स्पीकर्स, सभी श्रोतागण, सभी को मेरी तरफ से पंजाब से सत श्री अकाल। तो मैंने इसलिए एंड में बोला था, मुझे लगा मेरे सभी सीनियर स्पीकर्स हैं तो मैं अंत में ही बात करूंगी, पहले मैं उनको अच्छे से सुनना चाहती हूँ। मैं क्योंकि ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस भी पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं ट्रांसलेशन के टेक्निकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल जो थ्योरी है उसके बारे में बात करना चाहूंगी। तो प्राइमरीली जो मेन टास्क है ट्रांसलेशन का, एक वो है कि बेसिकली हमने एक इक्विवेलेंस ढूंढना होता है, एक नेचुरल इक्विवेलेंस दूसरी लैंग्वेज में, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में। तो एक बात यह है कि कोई भी दो लैंग्वेजेस आपस में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स नहीं रखती हैं। तो कोई भी दो लैंग्वेजेस के बीच में वोकेबलरी, ग्रामर, स्टाइल या स्ट्रक्चर के लिए कोई ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस, कोई ऐसा लिंग्विस्टिक कॉर्पस भी नहीं बना है कि हम आसानी से देख लें कि इस वर्ड के इक्विवेलेंट कौन सा वर्ड है, इस क्रिया के इक्विवेलेंट कौन सी क्रिया है, या क्या स्टाइल को हम कैसे ट्रांसफर करें दूसरी में, कैसे लेकर जाएं। लेकिन अगली इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हर एक लैंग्वेज में पोटेंशियल होता है कि वो दूसरी किसी भी लैंग्वेज में कही हुई किसी भी बात को अपने आप में बोल सकती है, बता सकती है, कह सकती है। तो ये भी एक फैक्ट है। लैंग्वेज है क्या? बेसिकली वर्बल साइंस है। तो हर लैंग्वेज में जो एक वर्बल साइन है उसके दो पार्ट हम टेक्निकली देखते हैं। एक कंटेंट वाला जिसमें मीनिंग और वो सारी चीजें, सिमेंटिक्स वाला पार्ट आ जाता है। दूसरा पार्ट है एक्सप्रेशन का, जिसमें मीडियम आ जाता है, स्टाइल आ जाता है, फॉर्म और बाकी सारी ग्रामेटिक और दूसरी सारी चीजें ग्रामेटिकल आ जाती हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है ये यूनिडायरेक्शनल है। इसमें हमने सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज तक का सफर तय करना है। ये भी एक बात है। तो अभी ये बात है कि ट्रांसलेटर ने क्या करना है, उसने एक केवल, जैसे सर ने भी पहले कहा, प्रोड्यूस नहीं करना, रादर टारगेट लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस करना है। तो तभी उसके बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो ट्रांसलेशन मैकेनिकल भी नहीं है अपने नेचर में, हम जानते हैं। तो इस सबसे पहला स्टेप जो ट्रांसलेटर को करना है वो है इंटरप्रिटेशन, और या उसकी कंप्रीहेंशन, जहाँ की अंडरस्टैंडिंग। पहले वो है क्या, फर्स्ट रीडिंग उसकी अपने लिए, खुद के लिए है। तो फिर आगे क्या करना है कि उसी जो उसने साइंस पढ़े, जो उसने कंप्रीहेंशन खुद के लिए अंडरस्टैंडिंग बनाई, उसको फिर आगे उस मैसेज को आगे लेकर जाना है। तो ये ऐसा भी नहीं है लेके जाने का काम कि आपने एक मतलब ड्रेस चेंज करना है वर्बल साइंस का, दूसरी नई में पहना देना है, ऐसा भी नहीं है। तो कोई ओल्ड वाइन को भी नई बॉटल्स में नहीं भर देना है। उसमें बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके साथ उसको 2-4 होना पड़ेगा। तो वो नेचुरल इक्विवेलेंस ढूंढने के लिए उसको जिन चीजों के साथ 2 हाथ होना पड़ता है वो शुरू हो जाती हैं, उसकी स्ट्रगल यहाँ से शुरू हो जाती है। क्या ढूंढने में? मीनिंग, कंटेंट, मैसेज, एक्सप्रेशन, फॉर्म, साइज, स्टाइल, ग्रामर, स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। तो ये सारी चीजें हैं जिसके साथ एक ट्रांसलेटर को 2-4 होना पड़ता है। तो क्योंकि मैं काम करती हूँ पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, ये लैंग्वेजेस पेयर्स में, लैंग्वेज के इन पेयर्स में मैं काम करती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा इसका जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात करूंगी। जो मैं देखती हूँ, जो समस्याएं मुझे आती हैं, वो मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करूंगी। टाइम बहुत कम बचा है, मैं ज्यादा नहीं लूंगी सर। तो पहली बात तो जोक्स के बारे में भी यही है कि आप उसका पूरा वैसा ट्रांसलेशन, अल्टीमेट जो मतलब पूरा एब्सोल्यूट ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाते हो। ऐसे ही फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स हैं पंजाबी में, जैसे कुछ प्रोफेसर राणा नायर ने भी बताए हैं। पंजाबी में हम कहते हैं मत्थे मार, मत्था डम दे, धक्के खा, परा मार, मुंह मत्थे लगना बंद ही करता, सैर सवाह पा दी। इनका मुझे अभी कहीं नहीं मिला। कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स हैं जिनका कई बार दूसरी लैंग्वेज में कुछ प्रचलन होता है, वो हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेकिन ये फ्रेजेस को बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे खे खा, चलदा बन, तितर हो जा, किथे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन, मान लो कि एक सेंटेंस है, एक जैसे सर ने पहले भी बताया कि जो लिटरेचर है
उसमें हमें जो रचनाएं मिलती हैं जिसका हमने ट्रांसलेशन करना होता है वो ऐसा तो नहीं कि टकसाली में लिखी होती हैं, वो तो किसी ना किसी रीजनल लैंग्वेज में लिखी होती हैं। तो उसमें जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, कित्थे जा रहे हैं, और आगे से जवाब मिलता है टट्ठे खूच, तो मुझे नहीं लगता इसका मैं कोई एग्जैक्ट इक्विवेलेंस, नेचुरल इक्विवेलेंस किसी दूसरी लैंग्वेज में ढूंढ पाऊंगी। सो ऐसा ही उल्टा भी है, जब मैं कभी रशियन लिटरेचर पढ़ती हूँ ना, तो ऐसी कई टर्म्स आती हैं जिनके बारे में मैं सोचती रहती हूँ कि इसको पंजाबी में क्या लिखूं, जैसे कि सोनाबाथ, स्पा, सप्पर। सप्पर अभी काफी मैं पढ़ती रही, ब्रायन वीस को और ये पॉलो कोलो को, तो सप्पर बार बार आता है। मैं सोच रही हूँ, डिस्कस करती हूँ सफर को क्या लिखे, है ना, एग्जैक्टली ऐसे तो डिटेल में पीछे रेफरेंस देना, स्टैटिक मार्क करके नीचे फुटनोट देना, तो वो तो हम करते ही हैं सभी ट्रांसलेटर्स। तो क्रीम टी, अभी इंग्लैंड गई तो वहां ना क्रीम टी, वहां मतलब आफ्टरनून टी है, तो उसका काफी ये ट्रेडिशनल उनका रिचुअल सा ही अब तो बन गया है। तो क्रीम टी क्या है, मतलब ये तो समझाना पड़ेगा। और जब हम टेक्निकली थ्योरेटिकली ट्रांसलेशन को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और समझाते हैं ना, तो ये चीज उसका लेंथ का भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सेंटेंस जो है वो 5 वर्ड्स का है और आप उसका ट्रांसलेशन 20 वर्ड्स के सेंटेंसेस में या फिर 2-3 सेंटेंस लिख देते हो, तो वो व्याख्या का काम भी साथ में करने लगते हो, वो ट्रांसलेशन नहीं है। तो वो भी फिर हम उससे, उसके पैरामीटर जो है उससे बाहर चले जाएंगे। तो ग्रीटिंग्स के लिए हर लैंग्वेज में अलग अलग शब्द हैं, तो हम गुड मॉर्निंग उससे ही अगर इंग्लिश के पेयर के साथ काम कर रहे हैं तो चला लेते हैं। तो हमारी इंडियन लैंग्वेज में, जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि उसी की ज्यादा बात करें तो राम राम, राधे राधे, पैरी पैना, मत्था टेक दिया, प्रणाम, तो उसका भी हमें, हमारे लिए चैलेंज है एग्जैक्टली कैसे कन्वे किया जाए। ब्लेसिंग्स हैं पंजाबी में बहुत सारी, जौंदा रहे, बुढ़ सागण हो, दुद्धी पत्ती फलें, ब्लेसिंग्स को क्या करेंगे, कैसे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन निकालेंगे उनका। तो कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, अगर मैं इंग्लिश की भी बात करूं, लॉन्ग डिस्टेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेल्स गर्ल, हम तो यही कहेंगे सामान बेचने वाली लड़की, है ना, तो वो फिर लेंथ का तो इक्वल नहीं रहेगा, वो बात तो जाती रहेगी। ऐसे ही दूसरे इंडियन लैंग्वेज में है, नील गाय है, नील कमल है। पंजाबी में ना हम एक ओल्ड लेडी को ना ये बहुत बोलते हैं, अगर उससे हम गुस्सा, हमें कुछ किसी बात के लिए उसके ऊपर कुछ गुस्सा आ गया तो हम बोलेंगे बुढ़ बडेल, और बुढ़ बडेल को हम ओल्ड लेडी, वो बात नहीं बनती अगर उसको हम ट्रांसलेट ओल्ड लेडी में करते हैं, तो साथ में जो दूसरी कॉनोटेशंस जुड़ जाती हैं वो अनट्रांसलेटेबल रह जाती हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। धरती तक पानी मार, है ना, ये जो ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो ये कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन्स का होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो ऐसा एक ना स्लैंग्स जो है, स्लैंग्स हर लैंग्वेज में स्लैंग होती है ना, तो पंजाबी में भी है। तो आप देखिए, आप अपने 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 लैंग्वेज में देखिए तो स्लैंग का भी ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। फिट्टे मुंह, दादे मंगाना, दुबड़िया, जानदिया दा सिर, है ना। कोई एक मैंने सेंटेंस में ऐसे ट्रांसलेट कर रही थी, तो किसी ने पूछा, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से पूछ रहा है कि अच्छा अज वट लिया सेवियां, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਣਦਿਆਂ ਦਾ सिर, आगे से रिस्पॉन्स जणदਿਆਂ ਦਾ सिर, मैं तो सारा दिन फलाना आ गया, तो उससे काम लंघी सारी दिहाड़ी लंघी। सो ऐसी चीजों के लिए तो हम क्या करते हैं ट्रांसलेटर, मुझे सच में लगता है कि अंडर ट्रांसलेशन हो रही है। वो जो वो कर रहे हैं वो क्या है, लॉस इन ट्रांसलेशन है, तो वो एक अंडर ट्रांसलेशन ही हम कर पाते हैं, या फिर वही फुटनोट। तो रस्में, रिचुअल जो हर लैंग्वेज में है, स्यापा वैन कीरने, मांग भरना, सुरमा पाना, कंगना खेडना, ये सारी जो रस्में हैं ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी टाइटल्स की बात सर ने की थी, प्रोफेसर राणा नायर ने, जैसे माड़ी दा दीवा के लिए उनको कोई इक्विवेलेंट वर्ड नहीं मिला है ना। इससे ही एक टॉल्स्टॉय का नावल है रिस्ट्रक्शन, तो उसका भी जो टाइटल का जो है ट्रांसलेशन मोया दी जाग है। तो अभी हम ट्रांसलेशन किसके लिए करते हैं, उस ग्रुप ऑफ रीडर्स के लिए जिनको जिस लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, उनको वो ना लैंग्वेज आती है, ना कल्चर से भी कोई ज्यादा उनका वो इतनी नॉलेज उनको उस कल्चर की भी नहीं है। तो मोया दी जाग तो मुझे लगता है कि पंजाबी रीडर्स को भी उसका मतलब उतना समझ में पंजाबी में भी नहीं आएगा। कई बार ऐसी ट्रांसलेशन हो जाती है कि जो रीडर उसको पढ़ पा रहा है ना, वो भी नहीं समझ पाता। तो ऐसी एक टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग है ना, तुर्गनेव का, उसका वैन बाहर आंदे है। और मैंने अभी एक ट्रांसलेशन किया, प्रोफेसर काटीमनी जी की किताब है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी, जंगली कुलपति की कथा है। जब मैंने ट्रांसलेशन किया तो सर ऑलमोस्ट सभी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में वो बुक ट्रांसलेट हो चुकी है।
तो कुलपति कुलपति वर्ड ही आता है टाइटल में, जंगली कुलपति की कथा। अब मेरे लिए फिर चैलेंज था, पंजाबी में हम कुलपति नहीं कहते वाइस चांसलर को, पंजाबी में कहते उप कुलपति। दूसरी लैंग्वेज में कुलपति वाइस चांसलर और चांसलर के लिए है, एक बाइनरी है, वाइस चांसलर के लिए है कुलपति और चांसलर के लिए है कुलाधिपति हिंदी में। पंजाबी में क्या है, वाइस चांसलर के लिए उप कुलपति और चांसलर के लिए कुलपति। तो मेरा ट्रांसलेशन का जो टाइटल बना तो वो उप कुलपति ही बन पाया। तो ऐसे जैसे किनशिप की सर ने ऑलरेडी बात कर दी है, चाचा मामा ताया फुफड़, अगर हम उनको आंट और अंकल में ही समेट लेते हैं ना तो वो भी अंडर ट्रांसलेशन है। तो इसीलिए जैसे हर जगह का फल सब्जियां हैं, फ्लोरा फोना की जगह फल सब्जियां भी आती हैं, तो हमारे पंजाब में ना आम की अगर हम देखें तो कितनी वैरायटीज हैं, दशहरी आम, बचोसा, कलमी, तोतापरी, है ना। तो उसको ट्रांसलेट करेंगे मैंगो, वो भी उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है ना। तो अगर जल चढ़ाना है तो उसको ऑफरिंग द प्रेयर्स ही कहें तो वो भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। अर्थी नु मोढ़ा देना, अग्नि देना, फूल चढ़ाना, टू परफॉर्म लास्ट राइट्स भी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, उसको भी हम नहीं मान पाते, ये भी अंडर ट्रांसलेशन में ही आएगा। बर्तन है हर जगह के, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। महीनों के नाम है, हाड़, सौन, भादों, अस्सू, कत्ता, वो भी हम उसका भी कुछ हमारे लिए अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। एक छोटा सा मैं और एग्जांपल देकर खत्म कर रही हूँ, वो ये है कि एक राइटर पंजाबी का, जब उस टाइम की बात है जब वो लोग ना अपना जो खरड़ा है उसको लिखवाने के लिए किसी टाइपिस्ट के पास जाते हैं, तो उसमें दो करैक्टर हैं, एक करतारा है, एक बंसो है, वो उसकी डॉटर इन लॉ है। तो वो उसमें बार बार टेक्स्ट में आता है, करतारे ने बंसो को कहा भाई खाना बना दे, भाई रोटी बना दे, भाई मैनू चाह दे दे, भाई मैं खेत नू चलिया। और इवन जो वो टाइपिस्ट था वो भाई को भाभी कर देता है, भाभी सिस्टर इन लॉ है, लेकिन वो लेडी वो जो है स्टोरी में वो उसकी डॉटर इन लॉ है। तो बात वो राइटर जाकर बोलता है कि तुम भाई को भाभी क्यों कर देते हो। अब मालवा में ये ट्रेडिशन है कि वो डॉटर इन लॉ को किसी अननोन लेडी को या किसी अननोन पर्सन को भी भाई यूज कर देते हैं, हालांकि ये मस्कुलिन है, मेल के लिए यूज होता है। तो फिर ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा मैंने सुना था, आपके साथ भी शेयर किया। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Bajwa ji. You have given many examples, of words in Punjabi which are almost impossible to translate. So these are the challenges. If every language comes up with these lists, it will be interminable list of words and expressions which cannot be translated. No, what is the way out? That is what we are asking ourselves in this particular session. What is the way out? How do we meet these challenges? One of the ways was footnotes that Mishra ji talked about, others talking about explanatory translations. And I do not think we have much more time. I just wanted to say one or two things about translation, and but before that, Kirti ji, would you like to add anything to what you have said? Just we have 2 or 3 minutes more, and can we take some questions? We can also take some questions because I gave you very little time. All I wanted to say was that there is an initiative being taken in Karnataka by a group called Bahuvachan. They bring out a magazine which deals only with book reviews of translations. They have instituted a scholarship for 3 people who translate plays from Marathi into Kannada. These are substantial grants, and this is like a writer in residence program, because they feel that in Marathi there is a very rich tradition of plays and writing of plays. In Karnataka, there's a very, very active, energetic, enthusiastic groups of theatre people who are producing and presenting plays. Now, this is a wonderful initiative. They've got a huge response from people who want to translate from Marathi into Kannada, and they do encourage
collaborative translations where the resource person is from Marathi and the target language is addressed by the Kannadiga. So I wish somebody picks up this idea and takes it forward. I'm being asked to wind up. I just wanted us to ponder over one particular aspect of our own languages, which is the concept of intralinguistic translation. That is, there are prose texts in Odia. I wonder whether that is the case with the others, which I'm trying to translate one, and I find it impossible because there are no dictionaries to help to go to. In the late 19th century, all our languages were such, they were born out of such syncretic culture that Fakirmon Senapati's famous novel Chauman Attagunta, which was published in 1903, when it was the second edition came out in 1925. His son Mohini Mohan Senapati supplied it with more than 400, translations of footnotes, because these words had gone out. Because of the Hindi-Urdu controversy, many of the regional languages tried to purge their languages from, Perso-Arabic and Marathi, because there was Maratha rule in Odisha. So all these words had come into Odia. Now by 1925, they were gone. So people didn't understand Fakirmon. Now it is impossible for a 21st century reader, Odia reader, to understand Fakirmon Senapati. And just to give one example, so some attempt is being made to modernize, like Chaucer, for example. So is something like this happening in the other languages? I wonder, because these are also challenges that we often face. Any questions? One or two questions? No? Okay. So up to you. Thank you so much, sir. It was really a wonderful session, and I must say a heartfelt thank you to all our esteemed guests, speakers, and all the attendees for being a part of this enriching session. Thanks a lot, and we really look forward to more sessions like this, for seeing you for our next sessions. Thanks a lot. Now we'll start our fourth and the last session of this evening within the 5 minutes, please.